ওরা তো অ্যান্টি বেঙ্গল, আমরা সব ধর্ম ভাষা সম্প্রদায়কে নিয়ে চলি। West Bengal's political heat is rising as assembly elections approach, with the BJP and the ruling Trinamool Congress trading sharp barbs across the state. The BJP's new state chief, Nitin Nabin, has accused the Mamata Banerjee government of double standards in granting religious permissions, claiming that Hindus must seek High Court approval to set up puja pandals, while Muslims can freely offer namaz. During his visit to the historic Dakshineshwar Kali temple in North 24 Parganas, Nitin Nabin said that he had received blessings in Ma's Darbar and also prayed before Mahakali. He remarked that in the state, one needs permission from the High Court to set up puja pandals, whereas permission is granted for offering namaz, calling this situation unfortunate. माँ के दरबार में आशीर्वाद प्राप्त किया है और माँ काली हम लोग सबको अपना असीम आशीर्वाद दे कि जिस बंगाल को उसके सांस्कृतिक विरासत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए और जिस पश्चिम बंगाल की संस्कृति ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, आज उसी पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं ऐसी तत्व जीवित हो रहे हैं जो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को चोट करते हैं। आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने का इजाज़त मिलता है, पर माँ की पूजा करने के लिए पंडाल का अनुमति हाईकोर्ट से लाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है और माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सभी निश्चित रूप से एक सोनार बंगाल, अपना पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का आशीर्वाद माँ से मांगा है। Nabeen's temple visit marked the second day of his organizational tour in West Bengal, aimed at reviewing the BJP's preparedness for the upcoming assembly elections. The party has been highlighting what it calls religious discrimination to energize its voter base. Responding to these allegations, TMC Supremo and Chief Minister Mamata Banerjee hit back during a rally in Mainaguri, North Bengal, calling the BJP an anti-Bengali party and accusing it of undermining the rights of citizens in the state. Addressing the crowd, Mamata Banerjee raised concerns about voter rights and electoral fairness. I respect the central forces, but please remember that manpower is the real power. आज बीजेपी पावर में है दिल्ली में, काल उलट जाएगा, ऐसा ही परिस्थिति है। याद रखिए, आपका काम आप इज्जत से कीजिए, मोहब्बत से कीजिए, हम लोग पूरा सहयोगिता करेंगे। अगर आप वोट का काम में बीजेपी के लिए पोलिंग एजेंट बन जाएंगे, तब हमारा माता जी है, बहन जी है, वो लोगों ने इसको रिप्लाई देंगे, हम नहीं देंगे। She also warned that the BJP's actions could escalate, saying, "Today they are snatching voting rights, tomorrow they will snatch citizenship through NRC." Additionally, the Chief Minister advised TMC candidates to be cautious while filing nominations, suggesting they take lawyers with them, citing instances in Assam where many nominations had been cancelled. As the campaigns intensify, West Bengal is shaping up to be a closely watched battleground, with both parties seeking to consolidate their voter base on issues of religious rights, voter identity, and citizenship, making the coming weeks critical ahead of the assembly elections.